तो बच्चे आज मैं आपको ना, समझ लो आपके हम उम्र ये दो स्टूडेंट हैं, इनकी एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाऊंगा मैं तो आज। मान लीजिए एक दिन ऐसा था, ध्यान से सुनना। एक दिन ऐसा था कि ये दोनों बच्चे यूनिफॉर्म डाल के, जो जो बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं अच्छे से वो अटेंटिव हो जाए। मैं तभी सुनाऊंगा। देखो डेनेट वाले बच्चे सुन ही नहीं रहे। बहुत अच्छी कहानी है, देखो। साइंस के लेक्चर में कहानी देख लो, फिर अगर मूड बन गया सही आपका तो सुनो ध्यान से। शाबाश। एक दिन क्या होता है, ये दोनों बच्चे यूनिफॉर्म होकर तैयार हो जाते हैं, ऐसे अपना टाई वगैरह लगा लेते हैं, स्कूल के लिए रेडी होना चाहते हैं, और दोनों बच्चे अपना अपना साइकिल निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल जाने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स के फोन पर स्कूल की तरफ से मैसेज आ जाता है। क्या आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आज स्कूल से छुट्टी है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आज कोई स्पेशल डे अनाउंस कर दिया और बच्चों की आज स्कूल आने की जरूरत नहीं, सभी स्कूलों में छुट्टी है। ये तो खुश हो जाते हैं, देखो कितने खुश हैं दोनों बच्चे। एक बच्चे का नाम है रजनी और दूसरे का नाम है मेघा। तो वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, मम्मा हम दोनों रेडी है और इकट्ठे मिले हुए हैं और स्कूल से छुट्टी भी होगी, क्या हम अपनी साइकिलिंग करके आ सकते हैं दोनों, बातें करते करते। उनके पेरेंट्स कहते हैं चलो जाओ, फिर जल्दी आ जाना है, ज्यादा दूर मत जाना, जाओ साइकिलिंग करो, एंजॉय करो, आपका स्कूल से छुट्टी होगी। तो अब ये जब एंजॉय करते हैं, दोनों अपना साइकिल निकालते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं देखो। रजनी एंड मेगा टुडे वांटेड टू डू साइकिलिंग, दे ग्रीस द साइकिल्स प्रॉपरली। उन्होंने ये देखो इसके हाथ में ग्रीस पकड़ा हुआ है, चेन पे, एक्सल पे, साइकिल के अलग अलग पार्ट्स में जो पोर्शन मूव करते हैं उनमें ग्रीसिंग करते हैं। ओके। तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है ये ग्रीसिंग क्यों करते हैं। दोनों बच्चे साइकिलिंग के मोड में हैं, ये साइकिल के एक्सल पे, ब्रेक पे, चेन कवर पे ग्रीसिंग करते हैं। क्यों करते हैं? एनीबॉडी? कोई क्लास में है जो बच्चा बता सके? यस। एक बच्चा कॉन्फ्यूशियस सेक्शन में, बेटे माइक पर आकर बताओ तो बड़ा अच्छा लगे। कोई भी एक बच्चा फर्स्ट बेंच में, सेंट्रल लाइन, व्हाइट शर्ट, माइक पे बता सकते हो? हाँ, एक, हाँ, ये डेयरिंग, आ जाओ आ जाओ। येलो स्टूडेंट आ जाओ बेटे, तुम ही आ जाओ। जो बच्चे खुद से हौसला करता है वो तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। क्यों करते हैं ग्रीसिंग ये? और स्मूथ बाइसाइक्लिंग। बहुत अच्छे बेटे, बैठा। तो इस बच्चे के जवाब को सही बोलना पड़ेगा। सर अगर ये ग्रीसिंग करेंगे ना तो मैकेनिकल पार्ट एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मूव कर सकेंगे, उनमें अटक कम लगेगा और साइकिल चलाने में उनका जोर कम लगेगा। ये तो इंग्लिश में होगी बात, हिंदी में साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे ग्रीसिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ग्रीसिंग रिड्यूसेस क्या बेटे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को एक और शब्द से भी जान सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रगड़ा लगाती है, ऐसे ऐसे रगड़ के निकलती है, तो दोनों पार्ट आपस में रब होते हैं। रब होते हैं तो फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन से एक चीज पैदा होती है, प्रोड्यूसेस हीट। हीट, राइट बेटे? और ग्रीसिंग अगर ना करें तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगी। अब यहां पर एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि टीचर ने फ्रिक्शन वर्ड के साथ फोर्स वर्ड लगा दिया, फोर्स, इसलिए आपको वन ऑफ द फोर्सेस पता लग गया। फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक आपको पता लगी है। और याद रखना आपसे पेपर में फोर्स की वो यूनिट भी पूछ सकता है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे फोर्स का एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसे।
ऐसा यूनिट कौन सा होता है? कैपिटल एन से याद रखना है बेटे, न्यूटन। न्यूटन। एक बच्चा मेरे को बोलता पिछले लेक्चर में, सर न्यूटन तो एक साइंटिस्ट था, आपने तो फोर्स की यूनिट ही न्यूटन बना दी। मैंने कहा यस बेटे, उसी साइंटिस्ट की को रिस्पेक्ट देने के लिए ये यूनिट बनाई है, क्योंकि उस साइंटिस्ट का साइंस के फील्ड में अच्छा योगदान था। तो जब हम यूनिट ही रख देंगे तो बार बार उसका नाम आएगा। दूसरे बच्चे ने बोला सर आपकी स्पेलिंग गलत नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटे, ठीक है। सर न्यूटन का एन कैपिटल नहीं आना चाहिए। यहां फिर मैंने उसको क्लैरिफाई किया कि अगर तो न्यूटन साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए लिख रहे हैं, बंदे के नाम को, तब तो एन कैपिटल रखना होता है। अगर न्यूटन यूनिट को बताते हैं, यूनिट फोर्स को मापने वाली यूनिट, कि फोर्स ज्यादा है कि कम, तब एन को स्मॉल लेटर लिखा। ओके, तो ये बात याद रखनी है। तो कोई बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब है 10 न्यूटन का फोर्स बड़ा होएगा 5 न्यूटन के फोर्स से। मैंने कहा बिल्कुल, बल्कि डबल होएगा। सर 5 न्यूटन का फोर्स 3 न्यूटन के फोर्स से ज्यादा होएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, सर फोर्स की कोई और यूनिट भी होती है? होती है। फोर्स की इंटरनेशनल यूनिट, ये वाली यूनिट न्यूटन, ये तो 200 कंट्रीज में चलती है। एक फोर्स की छोटी यूनिट भी होती है जो 30-35 कंट्रीज में चलती है, 35 कंट्रीज में। उसका क्या नाम होता है छोटी यूनिट का? अनदर यूनिट है। सभी बच्चे याद रखेंगे, वो अनदर यूनिट होती है डाइन, DYNE। और याद रखना, एक न्यूटन के अंदर 10 रेज टू पावर 5 डाइन होते हैं। सर पावर का क्या मतलब? पावर का मतलब होता है 1 के साथ 5 zeros लगानी है, इतने डाइन होते हैं। सर क्या ये यूनिट सिर्फ फ्रिक्शन वाले फोर्स की होती है, कि बाकी फोर्सेस जो आप बताओगे उनकी भी होती है? जहां पर भी वर्ड फोर्स लग जाए, चाहे वो फ्रिक्शन वाला फोर्स हो, चाहे कोई और फोर्स हो, ये यूनिट्स जरूर चलेंगी, न्यूटन वाली भी, डाइन वाली। तो अगर मैं आपकी क्लास में बैठा होता, तो मैंने अपने दिमाग में 3 बातें अभी याद कर ली होती। 3 बातें अभी। पहली बात, फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। दूसरी बात, फ्रिक्शन किसी भी फोर्स की 2 यूनिट्स होती हैं, न्यूटन जो ज्यादा देशों में चलती है, डाइन जो कम देशों में चलती है। तीसरी बात, 1 न्यूटन में 1 लाख, 1 लाख डाइन फोर्स होते हैं। 1 न्यूटन फोर्स में 1 लाख डाइन, देखो आप कैलकुलेट कर। और ग्रीसिंग से फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। अब इस कहानी को हम आगे लेके चलते हैं कि आगे क्या करते हैं ये बच्चे। जिनको यहां तक समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव द फीडबैक टू द टीचर। शाबाश, शर्म नहीं करनी बेटे, देखो मेरे को पता ही नहीं लगेगा। बटलर बच्चे जैसे, जो बच्चे फीडबैक नहीं देगा तो मैं फिर उसको मैं क्यों बताऊं कहानी? मेरे को वो आउट कर देना चाहिए सेक्शन। ओके नाउ, अब हम देखते हैं कि आगे ये बच्चों का आज मूड बना हुआ है सैर का, करते क्या है। शाबाश, नेक्स्ट फोटो में देखते हैं। अरे वाह, खुशी खुशी निकल गए। इनके साइकिल में एक कमी है। कौन बच्चा बताएगा इनके साइकिल में एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से इनका नुकसान हो सकता है? दोनों बच्चों का बताओ कौन सी कमी है। देखें आपकी ऑब्जर्वेशन, इनके साइकिल में एक सीरियस कमी है फोटोग्राफ में। बताओ देखें किस, अरे वाह, ये बच्चा बहुत ब्राइट है यार, कॉन्फ्यूज, और किसी सेक्शन ने बताया ही नहीं। माइक पर आकर बताओ, इनके साइकिल में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इनका बड़ा नुकसान हो सकता है? माइक पर आकर बताओ ना, एक कॉन्फ्यूशियस। एक ही से आओ, आओ व्हाइट वाला आ जाओ बेटे, आ जाओ, तुम ही आ जाओ। और कोई सेक्शन पता ही नहीं कर सका, देखें क्या कमी है। बताओ, माइक तो ऑन करो पहले। ब्रेक। यस, इस बच्चे ने देखा कि सर दोनों बच्चों के साइकिल में ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक नहीं होएगा तो इनका नुकसान हो ही सकता। ठीक है, तो चलो वो फोटोग्राफ की कमी है, अदरवाइज ब्रेक होता ही है साइकिल में। दे वेंट टू दी लेस ट्रेवल्ड स्मूथ सरफेस।
आज उनका मूड बन गया कि हम एक ऐसे सरफेस पे जाते हैं जहां कोई कोई जाता है, कभी कभी जाता है, और वो सड़क से हटके जैसे कच्चे रोड की तरफ निकल चले, लेस ट्रेवल्ड स्मूथ रोड। और आपको पता है, जब लेस ट्रेवल्ड स्मूथ रोड होता है, यानी कि नॉन स्मूथ कह सकते हैं आप, चलो नॉन स्मूथ रोड के ऊपर बेटे उनके टायर जो है ना, जब सड़क पे चलेंगे तो टायर और सड़क के बीच में ज्यादा रगड़ा लगेगा, ज्यादा रगड़ा लगेगा। ज्यादा रगड़ा लगने का मतलब है उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो सभी बच्चों ने सुनना है, ऑन नॉन स्मूथ रोड फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से लिखते हैं, मतलब अकेला फ्रिक्शन भी बोल सकते, फ्रिक्शन इसमें ज्यादा होती है। ओके, फिर भी वो खुशी खुशी चल पड़े हैं दोनों बच्चे। याद रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से उनको पैडलों के ऊपर भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फोर साइकिलिंग दे नीड क्या बेटे, हायर मस्कुलर फोर्स। ध्यान से सुनो, एक नया वर्ड लिख रहा है टीचर, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो मसल लगाते हैं, उनके लेग्स के मसल्स पैडलिंग करते हुए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ नहीं है, नॉन स्मूथ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लर्निंग सीखी? लेस स्मूथ फ्रिक्शनल रोड के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा है और मस्कुलर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब देखते हैं ये बच्चे आगे जाकर क्या करते हैं। लेट्स ओहो, तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं बेटे अगली फोटो में। अरे वाह, यहाँ देखो इनके चेहरे थोड़े थोड़े डरे डरे हुए। ये क्या हो गया? डरे हुए क्यों है? ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा हो। इट वॉज ए स्लाइट विंडी डे, द रोड वॉज स्मूथ बट स्टिल दे फाइंड इट हार्ड टू पैडल। कहते वो एक नए रास्ते पर निकल गए, उधर से मोड़ काट के आ गए, यहाँ पर सरफेस तो स्मूथ है लेकिन फिर भी उनका जोर ज्यादा लग रहा था। दे वर फाइंडिंग इट हार्ड टू पैडल। अब यहाँ पर लर्निंग पॉइंट ये है बेटे, लर्निंग पॉइंट ये है कि हार्ड टू पैडल, अभी भी उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। हार्ड टू पैडल का मतलब मस्कुलर फोर्स अभी भी ज्यादा है, जबकि रोड स्मूथ है, मस्कुलर फोर्स ज्यादा है। अब बच्चा कहेगा सर रोड तो स्मूथ है, तो अब उनको ज्यादा क्यों लगने लग गया? लेकिन बच्चे ने अगली बात नहीं पढ़ी कि उस दिन विंड से वर्ड बनाया, विंडी, बहुत ज्यादा हवा चल रही है अपोजिंग दिशा से, साइकिल जा रहा है इधर को और हवा आ रही है इधर को, दोनों बच्चों की बॉडी से टकराती है। तो याद रखना, अगर साइकिल चल रहा है इधर को, साइकिल चल रही है उधर को और विंड आ रही है इधर से, तो अपोजिंग हो गया ना, अपोजिंग। अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स होगी तो जोर तो ज्यादा लगना ही है, क्योंकि वो विरोध करेगी साइकिल का। अगर कहीं ऐसा होता कि हवा पीछे से आ रही होती, यानी साइकिल ऐसे चल रहा होता और विंड भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करती होती, तब तो इनके साइकिल को मदद मिलती, इजी साइकिलिंग हो जाती, फिर इजी साइकिलिंग। लेकिन हमारे कुछ ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? हार्ड टू पैडल। इसलिए हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि बच्चे अगर इधर को पैडल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता। गॉट इट? राइट? यानी विंड इज नॉट सपोर्टिंग, रादर इट इज अपोजिंग। अब हम देखते हैं इनका आगे कैसा एक्सपीरियंस है। छुट्टी हो रखी है इनका स्कूल में, देखते हैं आगे इनके एक्सपीरियंस कैसे होते हैं। ये बच्चे और खुश हो गए,
देखो कितने खुश हो गए दोनों बच्चे, आपकी उम्र के हैं बिल्कुल बच्चे दोनों। क्यों खुश हो गए? ऊपर पढ़ते हैं। Then they took a turn and suddenly found their cycle were moving down at more speed. It was thrilling experience. थ्रिलिंग में रोमांचित हो गए, उनका मन खिल गया। जोर ही नहीं लगाना पड़ा। ये देखो पीछे से ऐसे बेबी रोड आते ऐसे। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लंटिंग रोड आ गया। स्लोप स्लोप डाउन हो गया बेटे इसमें। तो हमारे पास क्या लर्निंग पॉइंट है इसमें? हमने देखा cycles were moving on sloping down road। स्लोपिंग डाउन रोड। जब स्लोपिंग डाउन रोड होता है ना बेटे, ध्यान से सुनना, तो इंसान के यानी साइकिलिस्ट के वेट का अपना ही एक कंपोनेंट मदद करने लग जाता है चलाने के लिए। इसका मतलब है वेट हेल्प्स टू साइकिल, अपने आप ही साइकिल आगे चले। अब यहां पर एक टीचर ने नया वर्ड निकाल दिया, वेट। इसका मतलब है ये तीसरी टाइप का फोर्स आ गया। पहले कौन कौन से फोर्स बताया टीचर ने? सर आपने एक फ्रिक्शनल फोर्स बोला था, और कौन सा फोर्स बता था? सर मस्कुलर फोर्स भी बोला था। और कौन सा बोल दिया? अब सर अब तीसरा कह रहे हो वेट। तो वेट भी एक फोर्स होता है। ओके, तो वेट का याद रखना। कभी भी आपसे वेट वेट को बच्चे हिंदी में बोलते हैं भार। तो इसकी यूनिट बच्चे से पूछो ना पेपर में, वो लिख देते हैं किलोग्राम। नो, किलोग्राम नहीं बेटे, ये तो मास की यूनिट है। वेट क्योंकि एक फोर्स है, इसकी यूनिट आपने न्यूटन ही लिखनी है, न्यूटन। वेट की यूनिट क्या लिखनी है? न्यूटन। ओके, और ये कभी नहीं भूलना, टीचर ने एक बार फिर से याद कराते हैं, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, भूलना नहीं है। राइट। तो हमने देखा जब स्लोपिंग डाउन होता है तो वेट का एक कंपोनेंट, अपने ही वेट का एक हिस्सा साइकिलिंग में मदद करने लग जाता है, और बच्चे खुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, रोमांचित, मजा आ गया, जोर भी नहीं लग रहा और साइकिलिंग भी हो रही है। अब देखते हैं इनका आगे एक्सपीरियंस क्या। और रास्ते में देखो क्या एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पर ये जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, एक बच्चा लड़का खड़ा है बेचारा गरीब सा, और वो पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है सड़क। ये दोनों बच्चे हैं ना जो रजनी और मेघा, ये दोनों की नेचर हेल्पिंग नेचर है। राइट, हेल्पिंग नेचर है। तो ये लड़का अकेला रास्ते से पत्थर हटा नहीं पा रहा, उन्होंने अपने साइकिल रोके दोनों बच्चों ने, और इस लड़के की मदद करने लगे। As they were going further, a child wants to move a big stone lying at the end of the road, right? But he must not do so. The two friends came forward from the cycle and started to move stone in the opposite direction. यानी दोनों स्कूल के बच्चों ने हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ध्यान से सुना। फोर्स की डेफिनेशन हमें पता लग गई यहाँ पर। यहाँ से हमें फोर्स की डेफिनेशन, कोई बच्चा बोले सर फोर्स को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे फोर्स जो होता है इन तीन कामों में से कोई भी एक काम कर सकता है। इन तीन कामों में सर कौन से तीन काम? फोर्स कैन सेट अ रेस्टेड बॉडी इनटू मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्टेड हो कुछ नोट कर लिए तो आई कार्ड मार्कशीट का है आपकी। तो उसको मोशन में लेके आएगा। बच्चा कहता है सर कैसे? तीनों बच्चे जोर लगाएंगे और पत्थर को रोल करके साइड पे करेंगे। तो पत्थर क्या था? रेस्ट पे था, उन्होंने मोशन में करा। एक बात और सुनो, जब ये अकेला बच्चा फोर्स लगा रहा था, मेल चाइल्ड, तब ये पत्थर हिल नहीं रहा था। इसका मतलब
जरूरी नहीं है रेस्टेड बॉडी को मोशन में लेकर आए, वो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगे और रेस्टेड बॉडी मोशन में ना आए। तो रेस्टेड बॉडी मोशन में तभी आ पाती है अगर पर्याप्त फोर्स लगे। क्या मतलब? अगर पर्याप्त फोर्स लगे, सफिशिएंट एनफ फोर्स लगे, सेक्शन टू मैनी टू मच नॉइस टेनेट। को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इन बच्चों को कंट्रोल करें, बटलर एंड डेनेट। और आपको पता होना चाहिए इस वक्त आपके प्रिंसिपल मैम भी इस वक्त आपको ज्वाइन कर रखा है, मैम आपके सामने है। सेकंड बात, ये फोर्स एक काम और कर सकता है, कैन स्टॉप ए रेस्टेड बॉडी, स्टॉप इन मोशन, बॉडी इन मोशन। जो बॉडी ऑलरेडी इन मोशन है उसको रोक सकता है। ओके, तीसरा काम क्या कर सकता है? तीसरा काम कर सकता है किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। जैसे एक लोहे की शीट है उसको फोल्ड करके सिलेंडर बना सकता है, एक कागज है उसको ऐसे रफ करके स्क्रैम्बल कर सकता है। तो तीसरी बात हो सकती है फोर्स कैन चेंज चेंज शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। तो ये इन तीन कामों में से या तीनों काम इकट्ठे कर सके, ऐसी पैरामीटर को फोर्स बोलते हैं। आम लैंग्वेज में बताऊं, कम से कम शब्दों में, रुकी हुई बॉडी को गतिमान मोशन कर दे और जो पहले ही गतिमान है उसको रोक दे और बॉडी की शेप को चेंज कर दे। रेस्टेड बॉडी को मोशन में ले आए, मोशन वाली बॉडी को स्टॉप कर दे या बॉडी की शेप चेंज कर दे, या ऐसा करने की कोशिश ही करे, चाहे कामयाब भी ना हो पाए, चाहे सिर्फ कोशिश ही करे, तब भी हम उसको फोर्स बोलेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये तो पता लगा ही लगा साइंस का, और हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। अब इससे अगली फोटो में देखते हैं क्या होता है। ये आगे चल पड़े, मेघा एंड रजनी then continued forward, their cycle slowed down because there is a rough patch। Look here, नीचे देखो पत्थर आ गए बेटे, नीचे जहाँ साइकिल पत्थर आ गया, पत्थर, इसका मतलब क्या हो गया? नाउ दे आर पासिंग रफ पैच, रफ पैच। यहाँ पर रफ पैच ऑफ ट्रैक होगा, वहां कौन सा फोर्स पड़ गया? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। और याद रखना, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है तो टायर ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस हीट, हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो रफ सरफेस पर जब साइकिल चलेगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और हीट पैदा होगी, क्योंकि ज्यादा रगड़ा लगेगा किसमें? रबड़ के टायर में और रफ पैच में। ओके, और एक बात, जब फ्रिक्शन फोर्स, उन्होंने तो साइकिल चलाना है तो उनका जोर लगेगा, देखो दोनों के फेस देखो, ज्यादा जोर लग रहा है, साफ पता लगता है। उनके आईब्रोज, आईब्रोज देखो आप, इट मींस इट नीड्स, इट नीड्स more circular, more muscular force, more muscular force for cycling, for cycling। तो ये हमने यहाँ पर सीखा, राइट। आगे देखते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस होता है। अगली फोटो देखो, ध्यान से देखो, अरे वाह। अब देखो, अब इसमें नोट करा आपने, एक बच्चे का बॉडी स्लिम है और थोड़ा दूसरा बच्चा हैवी है। हम कह सकते हैं कि मान लो जो बच्चा स्लिम है वो है रजनी, और ये मेघा करके बच्चा जो है थोड़ा हैवी। तो जो मेघा का बच्चा साइकिल उसके पीछे रह गया, जबकि दोनों के पास इक्वली एफिशिएंट साइकिल है, रजनी का साइकिल लीड करने लगा। यहां से हमें ये पता लगा, एक तो हमें अपने वेट का ख्याल रखना चाहिए,
बॉडी का वेट हमारी हाइट के मुताबिक ही होना चाहिए। दूसरा हमने ये देखा, मोर दी वेट ऑफ द साइकिल, की आवाज आ रही है? tougher it is to cycle, tougher it is। Why have you not? चल, और याद रहे वेट को टीचर ने एक फोर्स ही बोला था और फोर्स की यूनिट क्या बोली थी, न्यूटन। एक चीज और देखी बेटे, इसमें एक चीज और भी है। जब ये यहाँ से ऐसे जाते हैं तो इनका सड़क देखो कितना कर्व्ड है, कर्व्ड है। जब भी साइकिल किसी सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, ध्यान से सुन लो, सर्कुलर ट्रैक पे चलने के लिए चाहे पैदल चले, चाहे दौड़ के चले, चाहे साइकिलिंग करे, चाहे स्कूटर पे जाए, सर्कल में मूव करने के लिए, कर्व्ड पाथ पे मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है। उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटे? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट टू मूव इन ए सर्कल, टू मूव इन ए सर्कल। अगर ये फोर्स ना मिले तो ये उनका जोर वो चला ही नहीं सकते साइकिल, क्योंकि ये भी एक फोर्स है, इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी। ओके, तो यहाँ दो बातें हमने सीखी कि जो बच्चा हैवी होएगा उसके लिए साइकिल टफ होएगा, साइकिलिंग करना। दूसरी बात हमने देखी कि सर्कल में मूव करने के लिए, सर्कल में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, याद रखना, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स में एक बात और याद रखनी है, मान लीजिए कोई ये सर्कल है, इसकी बॉडी घूमती है, बॉडी यहाँ पर है और ये उसका सेंटर है। बाहर अगर बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बता दी है टीचर, बाहर से अंदर की तरफ, सर्कमफ्रेंस से अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है। Got it? तो टीचर आपको कहानी के साथ साथ फोर्स की सारी टाइप्स बता रहे हैं। आगे देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है। अरे वाह, अब जब ये थक गए ना तो इसने क्या करा, इस बच्चे ने अपने साइकिल को इसके स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, दिख रहा है, धागे के साथ बांध दिया बेटे। तो याद रखना, जब एक धागा होता है ना, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग इधर से भी बंधा हुआ है, इधर से भी बंधा हुआ है, ये देखो ये स्ट्रिंग इसका बंधा हुआ है, इसमें तनाव आ गया, घोड़ा गाड़ी के साथ बांध दिया उसने कार्ट के साथ। जब स्ट्रिंग बंधा हो जाता है ना तो ये टेंस हो जाता है, टेंस्ड, टेंस्ड स्ट्रिंग। और टेंस्ड स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स, ए काइंड ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स। याद रखना, जब भी स्ट्रिंग टाइट होता है तो टाइट स्ट्रिंग में एक फोर्स आ जाता है, टेंशन। और जिन किनारों पर ये धागा बंधा होता है, इन दोनों किनारों को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। टेंशन की इधर को भी होगी, इधर से बंधा हुआ है और इधर से भी धागा बंधा हुआ है, तो टेंशन की इधर को भी डायरेक्शन। टेंशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। तो कल को मैं पेपर में आपसे पूछ लूं टेंशन की छोटे वाली यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी छोटे वाली यूनिट होती है डाइन, और बड़े वाली यूनिट कौन सी होती है, न्यूटन। और एक न्यूटन में 10⁵ टाइम। अब हम देखते हैं इनका आगे का एक्सपीरियंस क्या। तो आगे का एक्सपीरियंस क्या होता है इनका, ये देखो, और से देखो बेटे, अब इनको इनकी फ्रेंड ने बोल दिया कि आगे डेंजरस रास्ता है, ध्यान से जाना। आप ऐसे करो, मेरे घर में 2 हेलमेट पड़े हैं, दोनों बच्चों को हेलमेट दे दिए उसने प्लास्टिक के, दोनों बच्चों को हेलमेट दे दिए प्लास्टिक के। यानी कि हमें साइकिलिंग करते हुए साइकिल के भी हेलमेट आते हैं, वो वियर करने चाहिए, राइट। इसमें बस इतनी बात है। और जो बच्चा रनिंग कर रहा है उसको ज्यादा मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द बोथ साइक्लिस्ट
आपको बताना चाहूंगा प्रिंसिपल मैम के सामने कि डेनेट के बच्चे को छोड़कर बाकी सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक सेक्शन ही पढ़ रहा है डेनेट। और प्लीज चेक किया जाए कि ये बच्चों में डिसिप्लिन क्यों नहीं है डेनेट। आगे देखते हैं इनको क्या एक्सपीरियंस होता है। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने नोटिस करा ये लड़की उनको अपने गांव में एक खास पत्थर के पास खास पत्थर के पास ये आप अपना साइकिल इस पत्थर के पास लेकर आओ और एक्सपीरियंस करो। जैसे ही रजनी और मेघा अपने साइकिल पत्थर के पास लेके आते हैं तो ये दोनों साइकिलिस्ट एक्सपीरियंस करते हैं कि इनके साइकिल खुद ही इस पत्थर की तरफ खींचे जाते हैं। दोनों साइकिल खुद ही पत्थर की तरफ खींच जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये पत्थर खास तरह का पत्थर, इस पत्थर का नाम होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कौन सा पत्थर होता है जिससे मैग्नेट बनती है? इसी पत्थर से मैग्नेट बनती है, मैग्नेट। और आपको पता है मैग्नेट लोहे की चीजों को खींच लेती है। साइकिल का फ्रेम किसका बना होता है? पूरा बॉडी लोहे का। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। तो चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? एक नया फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। देखो कितने सारे फोर्स बता दिया टीचर। टेंशन वाला, वेट वाला, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सभी फोर्सेस की यूनिट न्यूटन। एक बच्चे ने बोला सर आयरन आयरन एक मेटल है तो क्या मैग्नेट सभी मेटलों को खींच लेती है? नो नो नो, ये जो मैग्नेट होती है ये सिर्फ 3 मेटलों को खींच सकती है, सिर्फ 3 मेटलों को। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये 3 मेटलें होती हैं जिनको लोहा ये खींच लेती है अपनी तरफ। और 3 मेटलों और किसी को नहीं खींच पाती। एल्यूमिनियम को नहीं, कॉपर को नहीं खींच पाएंगे, सिर्फ 3 मेटलों को खींच पाती। और याद रखना जिस पत्थर से मैग्नेट बनती है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। असली में ये इस पत्थर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं मैग्नेटाइट, उनको इकट्ठा करके मैग्नेट बनते हैं। और इस मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। वो मैंने ऑक्सीजन, Fe आयरन का सिंबल होता है और Fe2O3 ये इसका फार्मूला होता है मैग्नेटाइट। याद रखना है। आगे देखते हैं इनका लास्ट लास्ट में क्या एक्सपीरियंस होता है। अरे वाह, अब देखो खुश हो गए ये किसी गार्डन में पहुंच के, जो इनका टारगेट था। जैसे ही गार्डन में पहुंच के आपने देखा बेटे, गार्डन में पहुंच के तीनों बच्चे स्विंग करते हैं, स्विंग करते हैं। तो इसके ये जो स्विंग का ये स्ट्रिंग है, ये जो चेन है इसमें टेंशन आ गई और ये सस्पेंशन है। और जैसे ये तनाव आ जाता है तो टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो जब ये ऊपर चले जाता है, ऊपर जाने के बाद हल्का फील करते हैं ये, और फिर वहां से भी नीचे आते हैं। तो कौन सी चीज इनको टॉप से नीचे लेकर आती है? वेट। वेट किस तरफ होता है? जैसे ये ऊपर चले जाते हैं तो वेट इनको नीचे खींचे। तो वेट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। वेट की डायरेक्शन किधर को होती है? ऑलवेज एक्स, ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट भी एक फोर्स ही होता है, आपको ये मैं बता चुका हूं। और सारी रस्सियों में तनाव आ जाएगा। तनाव आने की वजह से जो इनमें फोर्स होता है उसको टेंशन बोलते हैं, टेंशन। और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा लटके हुए पॉइंट की तरफ होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इस तरह से इन बच्चों ने बड़ा अच्छा अपना छुट्टी वाला दिन एंजॉय करा। ये दोनों बच्चे अपनी फ्रेंड को मिलने गए, उसके घर लंच किया, फिर इनके पेरेंट्स इनको लेके चले गए वापस। इस तरह से छुट्टी वाले दिन प्रोग्राम बनाया और इन्होंने
अपनी कहानी के अंदर अंदर सारे फोर्सेस जान लिए। जिन बच्चों को आज ये कहानी के रूप में फोर्सेस की सारी टाइप्स अच्छी लगी सुनने में, वो प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव रियली एंजॉयड द स्टोरी। शाबाश। तो मैंने क्या देखा, डेस्करेट, सिर्फ एक डेस्करेट सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने एंजॉय करा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है डेस्करेट का ध्यान नहीं था सुनने में। तो लास्ट में टीचर बता रहा है, ध्यान से सुनो, आखिरी पॉइंट बता रहा हूं बस। फोर्स क्या थे सर? मस्कुलर भी थे, और क्या थे सर? फ्रिक्शन भी थी, और कौन सा था सर? टेंशन भी थी, और कौन सा था? पुश की फोर्स कह सकते हैं, और कौन सा सर? पुल को भी फोर्स कर सकते हैं, और कौन सा सर? वेट को भी फोर्स कह सकते हैं, और कौन सा? जब वो उन्होंने जो प्लास्टिक के हेलमेट लगाए थे ना, अगर वो हेलमेट को उतार दें तो वहां पर उनके बाल ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर चार्ज के बीच में फोर्स होता है, चार्ज के बीच में फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके। और कौन सा फोर्स बताया था इसके बिना? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इतने सारे तो मैंने फोर्स ही बताया, ठीक है। इसके बिना इस फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बताई? ऐसा यूनिट यस, यूनिट क्या बताई? मतलब जो छोटी यूनिट है, टाइम। और क्या बताया? 1 न्यूटन 10⁵5 के बराबर। और क्या बताया? ग्रीसिंग करने से फ्रिक्शन डाउन हो जाती है। और क्या बताया? रफ सरफेस पर फ्रिक्शन अप हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और क्या बताया? फ्रिक्शन जो होती है वो हीट को पैदा करती है, हीट। अपने लेक्चर की कंप्लीट। तो जिनको आज अच्छा लगा लेक्चर, मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। वो बच्चे एक बार हाथ हिला कर दे, वेव योर हैंड। अच्छा एक बात बताओ, आपको हमने ये असाइनमेंट दी है कि नहीं दी? वेदर वी हैव गिवन यू सम, तो मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटे, इसमें क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या था? एक बॉडी है, उसमें इधर से कितना फोर्स लग रहा है? 3 न्यूटन। और इधर को कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। देखो बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों फोर्सेस अपोजिंग है, अपोजिंग, इसका मतलब इनका मुकाबला हो जाएगा। तो 6 - 3 ये होएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स यानी कि इस बॉडी के ऊपर 3 न्यूटन का नेट फोर्स इधर को आ जाएगा। जिधर को बड़ा फोर्स होता है उधर को ही नेट फोर्स। और सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड फिगर में, यहाँ पर 3 न्यूटन है और 7 न्यूटन भी इधर को ही है। दोनों फोर्सेस का सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस, यहाँ ऐड होएगा 7 + 3, 10 न्यूटन इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स। तो दोनों फिगर्स में अलग अलग फोर्स आएगा। गॉट इट? तो बाकी असाइनमेंट आपने घर से करनी है, इसके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Good afternoon, everyone. Take your time to settle down, like, just put away your signs, take 1 minute to relax, take a deep breath, close your eyes, whatever. Okay, and then we can start with English.
ये अनुपमा ने उसमें बनाई कन्वर्ट की थी पीपीटी तो फोन देंगे चीज कैसे इसमें भेजा अच्छा Okay, so everyone, I want your attention. Everyone, this is going to be something very interesting. Okay, this is like common, everything like so common which we use in everyday life, things we use, and we are going to learn about that. Okay, we are going to learn about the awareness. We are going to learn about the advantages, the disadvantages. What is going on with Dennett? Dennett House, could you please settle down? Yes, good. Thank you very much. Everyone, I want your attention, okay? 100%. And you are going to love it because there's something you are most interested in. So here we go. Here. First and foremost, I have a question, okay? When you look at all this, you know they are social media, okay? Everybody knows this is social media. Can anyone give me a definition of what is social media? Very good. Who will come out? I can see, I think so, one hand raised in Descartes. You don't even have to worry, okay? In this class, there is no judging whether you're wrong or right. Nobody's judging you. We are all learning, okay? We all are learners. Yes, Dennett, come out. That girl who raised her hand in yellow t-shirt, last bench. Could you please come out? What is social media? What is social? We all use it every single day of our life. Yes. Okay, Confucius. Yes, the boy in the middle row with the yellow t-shirt who raised his hand. Come out, bache. Come out. Yes. And if you people have different answers, you can give your answers, okay? Everyone, I want your... Ma'am, it's a social media platform in which we can see other people videos, photos. Yeah, it is very good. And because once I got this answer that it was internet. No, it's not internet. Your answer is absolutely correct. Like, you know, yes, this girl in Alejandro. You know why I say Alejandro? Because this is a Spanish name. And in Spanish, they don't have S. Okay? They don't pronounce things as S. So this is like Alejandro. Okay? And we are learning languages, so that's even much more important. So I just wanted you to know that yes, it is a platform. Okay, it is a platform where we can connect with other people sitting in our own house, holding this phone. If I have this phone in my hand, I can go online, and which is the most common social media platform which we use every day, all of us. We can't exist without it nowadays. Okay, Confucius, middle row, first bench. Aajo. Yes. Yes. Come on, I saw you. I caught you. Come here. Don't be shy. Yes, it's you. Everybody is poking you. Come on, come out. Come on, beta. Come out. Don't have to be shy for anything. Come on, sweetheart. I know sometimes we are hesitant because... YouTube. Yes, which one? YouTube या Google. Yes, they use YouTube. They use we use WhatsApp. We use Facebook. I don't know if your parents let you go on these, and you should not be going too much on this because you're too young. That is why we picked up this topic, okay? Because we want you to understand and become aware of all the things. Now, see,
all these things are not only for one particular thing. Okay, people think the most we use social media is for what? Why do we use social media? The most we use it for talking, connecting, entertainment. Anything else? Anything else? Now we are going to talk about all the different things. Like, there are social medias where you can discuss. There are discussion platforms. Okay, it is like a thread. Like I go on Quora Quest. Have you heard about Quora Quest? Anyone? Anyone? I like to be on that because if I post a question, people answer my question, and then I get like a couple of questions and I answer. It's like a thread, it's like a discussion. And I like to discuss. I like to discuss books. I like to discuss. So there are platforms where you can go and discuss books. There are platforms where you can upload your articles. There are platforms like Huffington Post. Okay, Huffington Post is like where I can put up my articles or stuff like that, and people can read and all that. So there are so many social medias which serve different purposes. Okay, so today we are going to social media is not only for talking. It is obviously it is everything is for connecting. There are apps where we can buy, sell for businesses. Understanding business, people post that also, like how you can start. For startups, they write down so many things, and like they can give you like free education things on Harvard, from Harvard school, from different schools in the world. So you can do those free what can you say, certificate courses and stuff like that. There's so much on social media, but then we have to be careful because very fraudulent activities also take place. Frauds. Okay, so today, but we are going to just talk about these, and then we are going to go to the next question. Okay, so what is this? Which I'm sure you all knew this. Okay, what is this? The first one. Here are the names, and I'm sure you know the logos. You know which logo this is and what does it mean? The first one. Many of you must be here on this. Yes? You don't know? This is Instagram. Okay? What is this? Just now that boy was talking about it. Who will raise a hand? Come here. Yes. Descartes, middle row, first one, green t-shirt. Aaja fatapat. Aaja. Jaldi se aao. When I was a student, I always wanted to come and answer my questions. Galat hai chahe sahi hai. I always wanted to, because in that way, all my questions were answered. If I was wrong, the teacher explained. If I was right, all my friends clapped for me, and I loved it. Yes. Could you please say? YouTube. Yes, very good. This is YouTube. Everyone knows. Okay. Okay, next one. What is this? This also everybody knows. This also everybody, yes. Dennett, middle, that boy in yellow t-shirt sitting in the middle, he's raised his hand. Aaja beta. Yes, the boy in the yellow t-shirt. I know why you people are stuck like that. Everyone knows about this. This is basically Facebook. very good. Facebook. Facebook. Now it is also called Meta, because it has name and COVID face. What is class is talking a lot. See, there is a phone, like, sign. So we know that it is something to do with chatting. Yes. Dennett, middle row, the boy on my right. Yes.
The boy who just now came, uska neighbor. Yellow t-shirt, blue turban. Aajo beta, come out. Then it, second bench, the boy sitting behind. Yes, I'm talking to you. Sir, I'm talking to this boy on my right, on my right, like your left. In the second bench. Okay. Any other? There are a lot of Confucius. Okay. Middle row, second bench, green t-shirt. Aja. Come faster. This whole class wants to answer. What happened to Alejandro? Viber. Tumblr. Tumblr is there. Okay. This is Viber. Yes, Viber. It is actually Viber. Okay. I'm not writing exactly like this because, okay, so it's Viber. Okay. At one point of time, it was really very, like, when people had to talk abroad with their relatives, and we know we have lots of relatives abroad, so people would talk like that. They were using Viber. It was one of the most popular apps. Okay. ये तो बहुत easy है. This is like super easy. Confucius on my left, yellow t-shirt. Yes, the boy who just slid on the side. Aja beta, fatafat. From Google Plus. Exactly. Very good. Sometimes we love to guess also. ये भी हमारे एक आर्ट होता है. ये तो हम इतना यूज करते हैं. We are all like stuck on it the whole day. Okay. Confucius. Okay. Last bench. There is someone who's waving. Last bench, blue t-shirt. Aja. Middle row. Okay. Probably from here. You're. Yes. Okay, the yellow one. I just saw the blue turban and I just thought it was blue t-shirt. This is like everyday thing. WhatsApp. Very good. We all use WhatsApp. See, it says app. So WhatsApp. Then we have this. What can it be? Now see, this is, I will give you a hint. Okay, this is like a business thing where you post your resume, where you post your data, like, your about everything. And people who are looking for candidates. Okay, normally we send our for interviews. Okay, we apply for interviews. यहाँ पे उल्टा है. Like if I post my biodata, like not biodata, my resume, then what will happen? There will be people who are looking out for people. They are in search of people, okay, who will work, who will fit the position. And if I fit the position, they will approach me. Okay, so what is it? On my right, the girl in a blue t-shirt, Aja. The girl who has raised her hand, yes, a purple or a blue t-shirt. By the wall, you're sitting by the wall, second last bench. Aja idhar. You raised your hand, yes. Ma'am, LinkedIn. Very good. Linked, it is linked. LinkedIn. So this is like a LinkedIn, and then you get into a link, like, people will approach you. They will send you interviews. They'll send you questionnaires. Aajkal interviews have become a big thing. It's like normally there are 3 rounds. First round with the HR, like, then you have to do a lot of online answering. Then with the main person, then you go and like online interviews and offline interviews and lots. Next, 8th, everybody knows. What happened to Alejandro House? Nobody knows anything? Yes. Then it, last bench, yellow t-shirt. What is the next one?
आ जाओ जल्दी बेटा थोड़ा जल्दी करा करो. Yes, Janet. Last bench, yellow t-shirt girl. She had raised her hand and now she's not moving. What happened, beta? आ जाओ फटाफट. There are many children who are eager to answer. Then I'll give them a chance. There are many. Confucius whole class is eager to answer. Snapchat. It's Snapchat. It's Snapchat. Okay. So we have Snapchat here. Then we come to the next one. The sign says the name. It gives away the name. Okay. It is also something where you can speak. Okay. Confucius, green t-shirt on my left. Third bench. Sitting behind the yellow. Yes. आ जाओ. जल्दी से आ जाओ. आ जाओ. Vimeo. Yes. Very good. Everybody knows this. Probably like, when we want to have like see, this can be a platform for meetings. Basically it is, okay? Meetings because you can share, you can like, share your screen, you can do a lot of things here. So this is like one of the most popular sites for meetings, classroom meetings, other. Yes. Okay. Deneth, last bench, green t-shirt. Aja, that girl. Quick. I also use this a lot. I can hold my classes here. Zoom. Yes, it is Zoom. Okay, you can zoom it, then this. Another one, all the actors, actresses, celebrities, they use this a lot. Okay, and then they get into trouble also. Alejandro, somebody has raised hand. Ajo, that yellow t-shirt boy. Jaldi se aao. I love confusion. Twitter. But Twitter. very good. Twitter. It is Twitter. Okay, this one. This one is, I think so, banned in India. It's a Chinese app, so we don't want to use it. Alejandro, that boy in the corner on my left. Yes, aaja beta. And TikTok. Yes, this TikTok. Okay. We don't want to use anything Chinese. But Zoom is also, I think so, Chinese, and we are using it. I don't know why. Anyway, next is again one of my favorites, printed. Oh, sorry, I gave away the name. Yeah. In Confucius, who will come? That boy on my left in blue t-shirt, Aja. He's waiting eagerly. Yes, who's sitting in front of the red one? Very nice. You wearing a black pant? Okay. Pinterest. Very good. Pinterest. Okay, what is this? What is this? Very nice. So everybody is eager to answer. That's amazing. Okay, first bench, middle row, yellow t-shirt. Ab aap aa jao. Yes. Ma'am, Telegram. Very nice. Telegram. And see how these are all communication, but in a different manner. Don't have all, they don't have the same features, all of them. Okay, next is I don't know much about this, so okay.
Middle row, last bench. Confucius, middle row, last bench, yellow t-shirt, aaja. Okay. Quick, quick, quick. Faster, faster. Tumbler. Yes, tumbler. The tumbler, Tumbler. And then this is, everybody knows it. This is, okay, on my right, Confucius, because everybody is raising their hand. Okay, the girl in a blue t-shirt who's sitting in the aisle seat. जो aisle seat में है. Yes. Ma'am, WeChat. Excellent. We chat. So this is how we come. Now see, each of these social media platforms, they need, what is the one common thing they all need? Battery चाहिए सबको? क्या चाहिए? They need some kind of what are the things they need? Either a desktop or a laptop or a phone. Okay, or your iPad. कुछ ऐसा चाहिए इनको, and you have to download the app, and then you have to use internet. Otherwise, you can't go there. So these are the basic needs to reach this. Then you go on this, and they have a lot of features, like a lot of things they will let you do. They can let you talk. They can let you post. They can let you make videos. They can let you edit. They can do lots and lots of stuff. Okay. And each one of them, many things are similar, but many things are different. And they are used for different purposes, some similar purposes, some different purposes. So here we have the whole list. This is just a few common ones, but we have like a huge number, okay, which are used all over the world and very popular in different parts of the world. So here we go. We move to the next question. Everybody is done with this? Now we come to here, next one. Okay, let me come. Here. Now let's talk about social media. Now let us see. Now you must be wondering what is tweet, and I've written NV. Can anyone guess what it is? What does it mean? What does it mean? N and V. So it is used as a noun as well as a verb. Okay. So when I have written NV, so this is used as a noun. Like when a bird, the sound of a bird is tweeting. That is like a noun because it's a name of a sound. And tweet, when you are tweeting on some app, then you're sending a message, you're doing an action, that is a verb. So it is used as both. Regret, like verb and noun. First it is a verb, and then sometimes it is used as a noun. This is the first noun, then sometimes it's used as a verb. Blog is a noun. Waste is a verb, but sometimes used as a noun also. Disadvantages is a noun. Abroad is an adverb. Okay. Meme is a noun. Emoticon or emojis is a noun. Feature is a noun. Okay. So this is how these words are. So let us now match them. What is a tweet? You can see from here and you can tell me quickly. What is a tweet? Could you please tell me? Come up with the answers. Come up with the answers. Yes. Confucius. Middle row. First bench, first boy in yellow t-shirt. He wants to answer that. Very good. What is a tweet? Post something on Twitter. Very good. Something you post on Twitter is a tweet. So I'm writing it here. Very good. What is regret? Now see, this is like, social media talk.
This is the way when people talk, like, they talk about social media, they talk like that. These are the words they use, and you should be aware of them. And you should, like, I tweeted. You don't always say, I sent a message. So everybody knows that you did something on Twitter. Okay. So these are the words which are used. Okay. Confucius, middle row, second bench. That boy, Ajab. What is regret? I want to change something you did in past. Very good. Want to change something? You did it in the past. So this is regret. Okay. So I regret doing it. So this is like, oh, regret. This is how you use the social media. This is called the social media lingo. Lingo means language. And it has. We will work more in the next class. We will work more on the language and you become aware. And then in the last class, we will learn about the way we have to protect ourselves on social media. We can't expose ourselves. And like, we have identity thefts and so many like, frauds and so many other activities happening. We want to be smart enough not to get trapped into all those nonsenses. Yes. What is the third one? Blog. What is a blog? How many is okay? Middle row, third bench, yellow t-shirt, that boy in Confucius. Confucius is really very active today, and I'm so very happy. Blog. Which one? Yes, Peter, what is a blog? Discuss information website. Which one? Could you please repeat? Use your time. That is useless, not protection. This blog is discussion informational website. Okay. So I don't know what your answer was. This is like a diary. This is a digital diary. You are writing this diary on net. Okay. You can write your opinions. You can write your feelings. You can write your experiences. And you can write your articles. You can, like, it's like a diary. You are doing a diary entry. Okay. It's like a travel log. Like you go to travel and you want to share your travel experiences. So you write a travel log and you write all these things. This is your blog. And people come and read your blog. Okay. Sometimes they will, like, they become your followers. They follow you and stuff like that. So this is a blog. A lot of people have blogs today. Okay. Now who will answer me the next one? The next one is waste. Waste. Anyone from Butler? Butler House, today I have not got a single answer from you. Anyone? Are you even paying attention, Bacha? Middle row, both the boys in yellow t-shirt. Could you please give me this answer? Yes. Could you give me this answer? What is waste from here? Very obvious. Okay. Very obvious. It's not something like, you will understand it. So which one is waste? Which one is waste here? Who will answer this? Okay. Deneth, the boy in red t-shirt, he's raised his hand, sitting right in the front. Come quick. Match one. Yes, it's age. Okay. So it is age. Could you please read out the whole sentence? Use your time in a way that is useless, not productive. Wasting our time. That's one of the favorite things we all do. We waste our time, okay? Many of us. I think so that's a favorite thing to do, to waste our time. Next, disadvantages. What are the disadvantages? Yes, I can see a lot of, okay, here in Confucius, there is a boy in red t-shirt. Yes, sitting in the third bench, I think so. By the window. Yes. Do come out. Disadvantages. Negative factor or bad thing. Yes, we all know that. Like, so similar, same words, but this is the
talk about social media. These are the words which are very commonly used, very, very commonly used when you speak about social media, and you should be aware of it. Okay, next. Next is abroad. Everybody knows what is abroad. Okay, have you been abroad? Who lives abroad? Abroad. Okay, we spell it. It's like a broad and UH. That's how you sound it. Okay, here in Confucius, whom should I call? The same children. Okay, the one sitting in the middle row, first bench, white t-shirt. He's been raising his hand for a long time now. What happened to Alejandro? You need some vitamin pills. Foreign country. Yes, in a Foreign country. in a foreign country, not in your own country. Okay, so this is the sixth one. This is how you say. Now, what is a meme? What is a meme? A meme. I know we all say, oh, इतने सारे memes बन गए 5 minutes में, like, you know, and then they just go. Everybody is looking at them and like, even on the meme, like, you know, we have these small emoticons who are like laughing or something, some kind of a thing. So basically, what is a meme? Okay. Yes, Confucius. Okay. On my left, fourth bench, the boy in green t-shirt. Ajo, come. Yes. What's a meme? Image or a piece of text. Yes, image or piece of text, often funny and spread by internet. So this is your meme. Okay. So this is your meme. Emoticons or emojis. What are emoticons or emojis? We all use it every day. ऐसे वाला तो हम दिन में 10 बार use करते हैं. Okay. Yes. So we all have this. Why I have only one class answering all my questions? I want the others too. What happened? Here, Denith. The girl who's talking, blue t-shirt. The girl who's talking in the middle row, blue t-shirt, come out and answer this question. Answer this question. What are emoticons or emojis? What are emoticons or emojis? फटाफट आ जाओ. I know आता है आपको. Ma'am, G. G, very good. So this is basically like, you know, we have this small smileys, or we have a lot of different things where we can, like, you know, we express, and but we should know the meaning. अगर हमने गलत भेज दिया तो probably the other person will misunderstand what we were trying to say. Okay, so we should know the meaning of all of them. Like, you know, this is like, okay, good. This is like not so good, not happy. So if you want to say good, you can't send this one. Okay, feature. The last one, feature. So here, this is the 9th one here. So, you know, now see, why would we buy a new, this phone is working well. Why would I buy a new one? Why would I spend so much money? Yes, come, who will come and tell me? Okay, this boy, Confucius, he wants to tell. Come, why will I go and buy? Like, you know, I already have iPhone 14 or 15. Why will I go and buy 16 or 17? Why? Okay, that boy in the end, in Confucius, green t-shirt, he's raised his hand. Aaj jaldi batao kyun buy karungi main? Like, this phone is doing perfectly fine. Why will I go and buy a new one when the new one comes in the market? Why will I go and buy? What could be the reason I'll like to spend so much money?
Okay, bolo, batao. I option. Okay, but I'm asking you a question. Okay, my question, please listen to me. Like, why will, like, my phone is perfectly fine. It's working very well. I'm happy. But the new version comes, okay, and I go and buy the new one. Why? Why? New features, there are technology in it. Exactly. Because the feature is something added as a special attraction. Sometimes, now this time they have made the case of lithium that I think so they did for 6th also, 16th also. It's become very light and very sleek. Okay. Then they did stuff with camera. They will increase your storage capacity. They will do something. They will do. They'll add more features. You can go on the notebook. You can do this. You can do. You can draw. You can erase. You can do you in the last one you could even if you clicked a picture there was someone in the background you didn't want you could erase that person. So all these new added features, they become exciting, and that is why people are ready to spend so much. Okay, so on all these social medias, we keep getting updates, and when we update our phones or we update these are the gadgets we use. But when we update our social media apps also, because there are so many features, and then we can use them for different अब Zoom में हम meeting करते हैं तो we can hide, we can mute the person who has started comments the meeting. He has so many things he can do. Okay, and that person can share the screen. That person can share stuff with you. You can read at the same time. You can look at the people whoever has joined, who has left. The person who is attending can write their comments, they can ask questions. So many features are there, and that is why we use all this. Now let's go to the next one. Okay, here. Okay, this should be a cakewalk for all of you. What is this? Who will tell me? What does this emoticon means? ये emoji क्या बोल रहा है? Happy? Unhappy? Fine. Okay. Descartes, the boy sitting on the first bench, white t-shirt, could you please come out? Okay, tell me, what does this mean? Sleeping. What is it? क्या है ये? What is? If I send this to you, what does it mean? This means sleeping. Sleeping? तुम रो रहे होते जब सोते हो? तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं? Also, रो रहे हो, बंदे की शक्ल है, like moderate. आंसू दे रहा था also. ऐसा नहीं होगा A person is little sad, like, oh, ज़्यादा homework मिल रहा है. So you will send something, oh, I have a lot of homework. Something like that, or little sad, मुझे डांट पड़ी, but not like extremely sad or जोर से रो रहे हो या something. So it's like you're a little sad. This everybody knows. What does it mean? If I give you this thumbs up sign, what does it mean? What am I trying to tell you? I'm not talking. This is a way of communicating. Okay, Confucius, the girl in red t-shirt. On my right. Aja beta. Come. She's sitting. Okay, blue t-shirt. I thought there was a girl in red t-shirt. Both the girls in blue t-shirt, one of you can come. One who's next to the wall. Because this is not going to be one. This can be like couple of answers here. Couple of answers.
I'm good. Very nice. So it's like good. What could be the next one? The boy sitting in the front, Confucius, white t-shirt. Ajo, you can answer. You raise your hand. Confucius. Hello. Did you sleep? Ajo. I love Confucius today. I just love you. I'm going to give you a thumbs up. Very nice. Smiling. Yes? Smiling. It's like Happy. no, it is like good to go. Like good to go. जैसे मैं बोलूंगी okay कर ले ये काम, you will do yes. Okay, good to go. Okay. This could also mean well done. Okay, this could also mean well done. Good job, you've done well. So all these things it's all positive. This is all positive. What about this? A choti si smile. Okay, Deneth. Deneth, the boy sitting on the first bench, red t-shirt, aajo. Aajo, fatafat. I can only see like a few cameras. I think so. It's not been adjusted well, and now almost the class is over. So what would this be? A little. I'm happy. Someone who's like okay, happy, nice. So here you are happy. Okay. Or it could be nice. Something like you show to a person and you're like nice, good. So this is like a happy smile. And what is this? This is some kind of the person is winking. There is a smile and there's a raised eyebrow. So what does this mean? Okay, here, Confucius. There's a boy in the middle row who's raised his hand. Aajo beta fast. Come here. What could this be? Ma'am, naughty. What? What? What did you say? Not. What did you say? I didn't hear it. I could not understand what you said. अब जो भी तुम करने आए थे ना वही है. It is like playfulness. Sorry, this is like here playfulness, like musty, like you're doing, like in musty way, like you'll wink, you will raise your suspicion, like if somebody is telling something, you're like really, that kind of a thing. Okay, you can wink at your friend, other friends, like oh this person is like faking, or this person is just boasting or something like that. So something like that, playfulness, mischief. Okay. Anything else? Okay, so today we end the class here. I'm sure you people loved it and I loved it too. Great response. Clap for yourself and tell me if you really like the class. We are going to work on this. Very nice. Clap for yourself. Okay. Have a good day. Enjoy yourself. Stay happy. Stay aware. Don't fall into traps and learn about these things a little more. Okay? Thank you very much. Once again, have a good day.